data type student. Okay, I want to represent the data of a student, so I am defining a structure to represent a student. So it will be represented like this: struct, that is the keyword. Tag name is a student. Now the body of the structure. Here you can see this code blocks automatically completes the body. Complete means it has already put the opening and closing braces and also the semicolon. Okay. So now I am going to define the members of a student. As you already know, I defined on previous turn character. I want to define name of student name. It should be some character structure, array of characters, and its size should be around say 20 or 30 characters. So this is the size of name. Then we need to store the address of a student. I'm writing add only. This is suppose 50 characters. साइज आपके पास 50 हो जाएगा. इंटीजर एज रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसलिए एज मेंबर ले लिया. And now suppose I want to store fees of the student, so I have stored fees. Whatever course the student is studying, I have stored the fees of the student. Other information that can be stored are enrollment number and roll number. I am not adding any information as it will make your program lengthy. I am just explaining how you can define the real world data to represent a student. Student is a real world entity and we need to represent it in computer memory. तो इसको represent करने के लिए आपको ये सब members की जरूरत पड़ेगी. आपको name चाहिए student का, it will be character array. आपको address चाहिए, it will be character array. Age, it will be integer. Fees, floating point number. अगर आप student का enrollment number और roll number भी store करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप character array use कर सकते हैं. Okay. So this is the definition of structure. And write the comment here. This is definition of structure. हमने जो नया डेटा टाइप क्रिएट किया है ये उसकी डेफिनेशन होगी. We have not defined any variable. Remember, the variables of this data type can be defined at this point. I can define it here like st1, st2, etc. Or one thing that we need to understand is that right now the only definition is global, and if I define these st1 and st2, then these variable will also become global. So I don't want to make the variables as global. I just need a global definition, not the global variables. Okay. Because if you are having global variables, the problem with global variables is that they can be modified anywhere in the program, and it is quite difficult to pinpoint the error if there's any. Okay, because of these global variables. So I have defined the structure. Now I am going to define my main program. Void main. Here I am defining. Now I need to define the variable name and the user defined data type that I have created just above, that is a struct student. I need to create the variables of this particular data type, so it can be created with the help of the keyword struct and the tag name student. This is actually the data type. So I have specified the data type. Now I need to specify the variable names. So I am defining st1 here, st1, st2, and st3. Suppose I have defined 3 variables. So I have defined 3 structure variables of type student. 3 structure variable define किए जिनका type क्या है, student type है, या you can say struct student type variables हैं. Since these are struct type variables, st1 is a structure variable, st2 is a structure variable, st3 is also a structure variable, and the type is student. So all these members st1, st2, st3, they will contain they are composite data types. Structure is composite data type, so it is composed of these elements. आप यहाँ पर देख रहे हैं, these are the data members of the structure. So each structure variable will have these members. So you will be having name of student 1 st1,
you will have address of student 1, you have age of student 1, you have fees of student 1. Similarly, all data members will belong to st2 and st3 also, because this is the structure of the variable. हमने एक user defined data type create किया है. This is the definition of the structure variable, and each structure variable will be of structure type, and it will contain all the data members. Those are specified in the template of the variable, template of the data type. जो आपने data type create किया है उसका जो template बनाया है, this is the template of our struct student. Okay, and all these variables st1, st2 and st3, these are of type struct student, so they are all of this pattern. So each student will contain name, address, age and fees. So these are three variables, st1, st2 and st3. And I told you on previous turn and previous to previous turn that we can access the members of these structure variables with the help of dot operator. One thing that I want to tell you is that we need to suppose initialize. I want to initialize st1 and st2 have not been initialized. Now I am going to initialize st3. So these members must be initialized in order in which they have been specified in the definition. So first member is the name. So I need to specify name. Suppose name is ABCDEF, first name and second name. This is name of the student. Now I have to specify address of the student. Suppose this is the student's address. Could be हो सकता है. I'm just specifying some random string. Okay. The first string is representing name of the student. Second string is representing address of the student. Third member will represent age of the student. Suppose age is 17 or 18 or 19, जो भी age हो आप specify कर सकते हैं. Now I have to specify the fees of the student. Suppose fees is 12,345.0. Okay. So this is the fees of the student. I have specified all the data members to represent the structure variable st3. Note that st1 and st2 have not been initialized, only st3 have been initialized at these values. Now if I want to print the values, अगर मैं इन values को print करना चाहूँ जो st3 के अंदर है, तो हम इसको किस तरह से print कर सकते हैं? I can print using the dot operator. Okay. Print means I can access all these members with the help of dot operator, and these can be printed with the help of print statement. So I'm going to print the value of all these members of the structure variable. So I'm printing printf. I'm formatting also. Name. I have to specify name of the student, %s. Then if I need another information in next line, then I can specify in the next line. Otherwise I can specify with the help of tab also. So suppose I am specifying new line, then address equals to %s, then again a new line, and then I'm specifying age of the student, age equals to %d, new line, and then what is the member? Fees equals to %f. We are printing floating point number, so we need to use %f format. So I have specified all the format specifiers. Now I have to specify the variable names, which variable is to be printed. Name किसका print कराना है? We want to print the name of student 1, student 3. So it should be specified in this fashion. st3, this is the specification of a student, and which data member you want to print? You want to print name of the student. So I have specified st3. This is the name of the variable. We have specified, we have defined three variables, st1, st2 and st3, and
I am going to print the value of st3. So I have to specify st3, and which member I am going to print the name of the student. So I have specified st3 dot name. This dot operator is called the member access operator. Okay. Now second thing that I have to print is st3, means member of st3. As you specify the variable name, it means you are going to print the value or the member value of this particular variable. So I am going to print the member value of st3. st3 dot head. The variable name is head only. I have specified address in the print statement, but the member name is add only. So I have specified add. Okay. Now third member that is to be printed is st3 dot each, and the fourth member is st3 dot fees with small f. I will specify with capital F in print statement. That is the output formatting. वहाँ पर आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे, इट शुड बी सेम एज डिफाइंड इन द स्ट्रक्चर. ओके, so it is defined with the small f, so it should be defined as small f. So this is the end of our print statement, and I am not going to print anything else. So this is the end of program. I have initialized a structure, I have defined a structure, I have initialized the structure variable, and I have printed all the values of the structure. This is a very small program. Okay, so we should run this. I'm going to run. Just see. This is the output. You can see output is formatted. This is called formatting. Name is in one line, address is another line, age is in another line, and fees in another line. So I have formatted the output in this particular order. Okay, in this particular fashion. We can also use justification of the output. जो आप देख रहे हैं strings, and these can be justified. They can be left justified or right justified. We can specify width also. तो ये आपके सारा डेटा मेंबर जो है वो एक तरह से एक लाइन में फॉर्मेट होके भी आ जाएंगे अगर हम इनकी फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई करते हैं. We have just specified new line, so they are all in each member is printed in some new line. So, name and then address and then age and then fees of the student. Okay. So this program is for definition of the structure, initialization of the structure, and printing of the structure. So you can say this program is, you can specify the objective. This program defines a structure presenting student. Okay. Find किया आपने structure student को represent करने के लिए. Then you have initialized the structure variable and then printed the values of the structure variable. इतना काम हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में किए हैं. इसके लिए क्या आपके पास जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है. सो आई हैव डिफाइंड अ स्ट्रक्चर. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर प्रोग्राम में ये कहा जाता है कि आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, सो यू कैन डिफाइन इन दिस फैशन. आपको कहा जाता है इनिशियलाइज करना है, यू कैन इनिशियलाइज इन दिस फैशन. अगर आप देखें यहाँ पर इनिशियलाइजेशन इज सिमिलर टू एरेज. एरे में आप इंडिविजुअल मेंबर्स स्पेसिफाई करते थे, यहाँ पर आपने इंडिविजुअल मेंबर्स को स्पेसिफाई किया. एरे में हर एक मेंबर जो है वो सब होमोजीनियस होते हैं, मींस दे आर ऑल ऑफ सेम डेटा टाइप. Here members are heterogeneous, so you have specified heterogeneous members. First member is character array of size 30, second member is array of character size 50, third is the integer, and fourth is float. So structures containing heterogeneous element. So this is the way to initialize the structure members. You have to specify all the members in the same order as defined in the structure definition. Okay, you cannot change the position of these members. आप जो है फर्स्ट को सेकंड पे, सेकंड को फर्स्ट पे नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल बी इनिशियलाइज्ड इन द सेम ऑर्डर.
first value will be stored in variable name, second value will be stored in the variable address, third in age, fourth in piece. So this is the way to initialize the structure. जब हम यूनियन करेंगे तो हम देखेंगे यूनियन में भी यही मेथड है, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर यूनियन का भी एग्जांपल देख लें. दिस वाज द एग्जांपल टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर. अगर हम इसमें यूनियन ले लेते हैं, बल्कि आप इसका साइज भी ले लिए. एक चीज और, देयर इज एन ऑपरेटर साइज ऑफ, आप लोगों को बताया भी था साइज ऑफ ऑपरेटर. वी कैन एक वेरिएबल और ले लेते हैं, integer size. This is the integer type variable, and I am going to calculate the size of, size equals to size of. Note this, this is the operator size of. Size of operator is used to calculate the size of any data type. किसी भी data type का आप यहाँ size calculate कर सकते हैं. You can calculate the size of basic data types, or you can calculate the size of user defined data types like structures and unions. So you have to either specify name of variable or type of variable. कुछ भी आप यहाँ पर specify कर सकते हैं. अगर आपको integer का size चाहिए होता है, then you can say specify int, or you can specify the name of variable also. आप अगर यहाँ पर size का ही size calculate कर लेंगे, it will also be stored in size. This is for basic data types, and when we are calculating the size of structure variables, we have to specify either name of variable, structure variable, or data type. So we can write st1 or st2 or st3. किसी का भी आप size calculate कर लिए, they are all same. So this size of operator will calculate the size of st1, and it will be stored in the variable size. Okay, now I am going to print size of student equals to %d. इस वेरिएबल में हमने लिया साइज में. Now save and line. साइज ऑफ, देखिए मैंने न्यू लाइन ही लगाया तो इसलिए साइज ऑफ फीस के लाइन में ही आ गया. साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू 88. नोट कि साइज कितना आ रहा है, 88 आ रहा है. कैलकुलेट करके देखिए आप. 30 का पहला मेंबर है 30, दूसरा मेंबर 50, so this is 80. Integer is 4 bytes in code blocks, or the latest compilers, these are supporting 4 byte integer. So the size of integer is 4 byte, and size of float is also 4 byte, so this is 88. Is it clear? The size of structure is 88 bytes. Okay, you can see that we have initialized all the members, and we have printed all the members. So which member is printed in the last, or which member initialized in the beginning, doesn't matter. All the members have been initialized, and they can be accessed anytime. कभी भी आप इनको access कर सकते हैं. They will contain the value that you have stored. Now if I change this structure into union, okay, please note that I am going to change this structure definition into union. Control F. I'm going to replace. So find and replace होगा. कुछ मुश्किल काम नहीं, से भी कर सकते हैं. सर्च में होगा फाइंड, ये रिप्लेस. ओके, आई एम गोइंग टू रिप्लेस स्ट्रक्ट विद यूनियन. जहाँ जहाँ स्ट्रक्ट आएगा वो यूनियन से रिप्लेस हो जाएगा.
सभी जगह रिप्लेस कर दे। नाउ दिस इज डेफिनेशन ऑफ यूनियन स्टूडेंट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यूनियन स्ट्रक्चर को इसमें पार्ट में रिप्लेस कर दिया। दिस इज यूनियन यूनियन यूनियन, ठीक है। नाउ दिस प्रोग्राम हैज बिकम program to save it as union union.c. I've saved it as union.c. Just see that I have just changed from structure to union. So what will happen now? Now we are having 4 members in the union: name, address, age, and fees. Which is the largest member? You can see the size of each member. I'm specifying size against each member. साइज कितना है नेम का? इट इज 30। इसका कितना है? इसका है 50। इंटीरियर का कितना है? इज 4। रोड का कितना है? इट इज ऑल्सो 4। ओके, so in case of size calculation of structure, all the sizes are added. So this is 50 plus 30, 80 and 4 and 4. So this will become 88. So in case of structure, the size was 88. Okay. As I've told you that in case of union, the memory is allocated based on the size of members of the individual members. So which is the largest member? You can see the address is the largest member of size 50. So compiler will allocate only 50 byte of memory. So its size should be, the size of union should be 50 byte. Okay, instead of 88 byte, it should be 50 byte only now. And we have initialized. You can initialize in the same fashion. Yes, हमने structure को initialize किया था. It will remain same because it is also having all the members. But what will happen? जो member सबसे बाद में initialize होगा, it means only fees will be valid and all other elements will become invalid. Okay, let us try to run this program. You can see name is ABCDEF, address is also ABCDEF, age you can see this is garbage, fees also garbage, and the union of size of union of student is 52 bytes. 52 maybe some because of some padding it has adjusted the size to 52 bytes. Sometimes compiler do some padding कि आपके पास जो मेमोरी अवेलेबल है उसमें अगर कहीं कुछ पैडिंग की जरूरत पड़ती है तो कंपाइलर अपनी तरफ से कुछ मेमोरी उसमें ऐड कर देता है. सो दैट इज कॉल्ड पैडिंग. पैडिंग की वजह से ये 52 बाइट्स हो गया. अदरवाइज यू कैन आल्सो स्पेसिफाई साइज एज 50 बाइट्स ओनली. ओके, यहाँ पर एक्चुअल साइज 52 बाइट हो गया बिकॉज ऑफ पैडिंग. बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग बाय पेन एंड पेपर मेथड we should specify, we should note the size as 50 bytes only. Okay, here you can see that name is how many bytes? 8 bytes, and name is being represented correctly, but what we have stored in fees, it has overwritten all other values. Name maybe इसी वजह से जो आपका नेम वाला पार्ट जो है मॉडिफाई नहीं हुआ है, बट इट इज नॉट गारंटीड. यू कैन सी दिस एड्रेस हैज मॉडिफाइड. एड्रेस में क्या मैंने स्पेसिफाई किया था? दिस वाज अ लॉन्ग स्ट्रिंग बट इट हैज बीन मॉडिफाइड. एज में 17 किया था, एज भी आपकी जो है वो गार्बेज हो गई. फीस में जो किया था, फीस को भी गार्बेज कर दिया इसने. तो ओके, इसने ओनली फर्स्ट एलिमेंट इज रिमेनिंग एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव बिकम इनवैलिड. हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर यूनियन को इनिशियलाइज किया, इसमें सिर्फ पहला मेंबर आपका इनिशियलाइज हुआ है, बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो गार्बेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, we have seen what happened. Now if I scan the value of any variable, suppose I am modifying the age of a student, I can modify in this fashion: st3 dot age equals to say 17. I have modified the age of a student. Okay,
मैंने एक मेंबर को मॉडिफाई किया, only one member, that is age, has been modified explicitly. Now if I print the member values again using the same statement, Control C, Control V, now I should run it again. तो आप देखें इसमें name is garbage now. In the first run, name is initialized at ABCDF. Addresses, only 4 bytes have been initialized, or you can say the initialized may be in reverse order. First the fourth member is initialized, then third, then second, then first. That's why only first member is valid at last. Okay, so this is depending on compiler's strategy कि आपका कौन सा मेंबर पहले इनिशियलाइज किया कंपाइलर ने. इनिशियलाइजेशन के टाइम पर हो सकता है कि आपका ये राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइज कर रहा हो. वैसे भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव. सो first this member has been initialized, then this member has been initialized, then this member has been initialized, and at last we are having only valid name. Now I have modified one member of the union variable, that is age. You can see here I have modified the age of the student. Since the age has been modified, so now what happened? All other members have become garbage. You can see name is some garbage value, address is some garbage value, age is 17, and fee is again garbage. Fees mein 0 nahi tha, but now it is 0. Okay, if I modify this again, Control C, Control V, really हम fees और age को directly modify कर सकते हैं because these are normal data types, and rest of the members are the other two members, name and address. These are character arrays, and arrays cannot be directly modified. Array के किसी particular member को आप modify कर सकते, but you cannot modify the whole array. So I am modifying now fees of the student. Fees equals to, suppose I am specifying as 123.5. Okay, so I have specified fees as 123.5. Now save and compile and run again. प्रोग्राम बंद नहीं किया था, प्रीवियस रन था. Stop it. Now I need to run it again. Now first run आप देख रहे हैं जो इनिशियलाइजेशन था उसमें हमारे पास पहला मेंबर जो है वो करेक्ट आ रहा है, बाकी सब इनवैलिड आ रहे हैं. इन द सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने दोबारा से किया उसमें एज को इनिशियलाइज किया, एंड आई हैव प्रिंटेड ऑल द मेंबर्स अगेन. यू कैन सी ऑल द मेंबर्स हैव बिकम इनवैलिड. नेम इनवैलिड, एड्रेस इनवैलिड, only age is valid, and fees is also invalid. And third attempt I have modified the fees of the student. So now since I have modified the fees, you can see fees is correct, and rest of the members, name invalid, some other garbage value, पहले आपके पास कुछ और garbage value में आ रहा था, अब आपके पास कुछ और आ रहा है. Address also garbage, age has also become some garbage value. You can see the age is also garbage, and fees is 123 only. जो भी मैंने स्पेसिफाई किया था, you can see here the fees as specified by me is 123.5. so it has been correctly implemented or correctly printed. Okay, is it clear कि आप यूनियन मेंबर में जो भी मेंबर सबसे लास्ट में आप मॉडिफाई करते हैं सिर्फ वही मेंबर वैलिड रहेगा, बाकी सारे मेंबर जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे. उसका रीज़न क्या है कि आप जब लास्ट मेंबर को मॉडिफाई करते हैं या जिस मेंबर को भी आप मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज दे आर शेयरिंग मेमोरी. जो यूनियन मेंबर्स हैं दे आर ऑल शेयरिंग सेम मेमोरी. सो whichever variable you scan at last or you modify at last will modify the content of previously stored values. तो जो भी आपने previously store किया होगा वो सब values आपको modify हो जाएंगे. So you can see in first statement we have initialized, so only name is valid and all other elements have become invalid, and after that I have initialized age. So now age is valid and all other elements are invalid. And in third attempt I have modified the fees of the student. So now fees is valid and name, address and age, they have become invalid.
So you should remember that in case of unions, only element which is being scanned at last is valid at a time. Or you can see only one element is valid at any time. ओके, कोई भी आप अगर यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सिर्फ एक मेंबर आपका एक बार में वैलिड हो सकता है, सारे मेंबर्स एक साथ वैलिड नहीं होंगे. सो यूनियन कैन ओनली बी यूज्ड इन दोस सिचुएशंस वेयर वी नीड ओनली वन मेंबर एट अ टाइम, नॉट ऑल द मेंबर्स. लाइक इन दिस इन सिनेरियो वेयर वी हैव defined structure, we have defined a union of a student. We need all the data of student all the time. So this is not the appropriate example for union. Union is not to be used for this particular purpose. Okay, union can only be union should only be used in those situations where we need only one member at a time. So I have told you that we can define a variable, a union variable of type say, इसका नाम चेंज कर रहा हूँ मैं यूनियन का. आई एम कॉलिंग इट सुपर वेरिएबल. सुपर वेरिएबल, ठीक है. विल कंटेन सम कैरेक्टर सी. कैरेक्टर हो गया आपके पास इंटीरियर हम ले रहे हैं आई, फ्लोट को ले रहे हैं एफ, और डबल को ले रहे हैं बी. क्लियर? साइज विल बी now 8 bytes only. This super variable union is having 4 members. One is character, one is integer, one is float, and one is double. So there are 4 members. Now you can see the size. Modify. I'm not going to initialize these members. I'm just writing super variable supervar, that is v, or you can say v1 comma v2. तो वेरिएबल ये एक ही की जरूरत है, देख लीजिए. Now just to move all these statements. Now this super variable is a variable which can hold any data type at any time, but only one data type is needed at a time. So this is somewhat appropriate from implementation point of view, that we can store any data type in this variable. That's why I have named it as super variable. Okay. Otherwise, you can store only floating values in a float variable. You cannot store character in a float variable, or you cannot store float in character or integer. Okay. So that's why I have created a super variable of type union. And first of all, I should try to print the size of union. Size equals to size of say v1. Now I'm going to print the size. Size equals to percent d, comma size. Print the size. Save and run. And size is 8. Here no padding is needed, so it has not padded anything else. And the size of largest data type is 8 bytes, so it has assigned 8 byte of memory. Okay. First member requires 1 byte, second requires 4 byte, third requires 4 byte, and fourth requires 8 byte. So it has allocated 8 bytes of memory. No padding is needed, so it has not done any padding. Okay. Now I can store any value, since this is super variable. So if I need double value, then I can write, or if I want to scan,
If enter a character, कैरेक्टर अगर आप स्कैन करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमने मैसेज दिया है, देन आई एम स्कैनिंग scanf %c %, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, विच वेरिएबल v1 कौन सा मेंबर हमें स्कैन करना चाह रहे हैं, वी वांट टू स्कैन कैरेक्टर इन v1, so we have scanned %v1.c, so only c will be scanned, and you can use it anywhere. You can print the value, not try to print v1.c. आपको इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए v1.c लिखना पड़ेगा. Save and run. Enter a character size is still 8 bytes. I am scanning the character capital A. The character entered is A. So I can store any data type in this super variable. So v1 can be used to store either character or integer or float or double. So this v1 can hold any data type. So this is the application of union. This is the appropriate application, because we need only one character at a time, because this is our super variable and it can hold any value. So it can hold either character, or it can hold integer, or it can hold double, or it can hold float. कोई भी वैल्यू इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वन वैल्यू एट अ टाइम उसमें वैलिड वैल्यू होगी, और वन वैल्यू एट अ टाइम कैन बी होल्ड. सो दिस इज एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ यूनियन. इसको भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हमने यूनियन को डिफाइन किया है. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ यूनियन. यू कैन मेक इट स्मॉल. ठीक है, इसको हमने जो प्लस साइन कर दिया है. दिस इज योर मेन प्रोग्राम. मेन में हमने एक साइज लिया है, एक यूनियन वेरिएबल डिफाइन किया है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन वेरिएबल. यहाँ पर हमने यूनियन वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसको कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करेगा. तो ये डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन होती है. ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल. एंड हियर इन दिस डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप. जो डेटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हैं ये उसकी डेफिनेशन है, और यहाँ पर आप जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ये वेरिएबल की डेफिनेशन है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन defining a variable and defining a union. So if you are asked to define a union, so you can define only this thing. If you are being asked how to define a variable of union type, so you can define in this fashion. And if you are being asked to initialize, then you can initialize all the members. And if you are asked to modify, then you can access जो आपके पास normal variable and basic data types हैं, they can be modified directly. Okay. In structure C. Now come to our structure program. जो चीज़ मैं आपको इसमें और बताने वाला था कि स्ट्रक्चर और यूनियन आपको क्लियर हो गया. यूनियन में हम क्या कर सकते हैं कि यूनियन में हमें जनरली एप्लीकेशन इस तरह की होगी. एक मेमोरी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, एक मेमोरी इसमें जो सबसे बड़ा मेंबर है उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट होगी. कहीं कहीं कंपाइलर पैडिंग कर देता है, उसकी वजह से चेंज होता है. बट यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला. क्या जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसके बराबर उसका साइज होगा. कि कंपाइलर के हिसाब से आपको कैलकुलेट नहीं करना है. कंपाइलर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी पैडिंग उसमें कर देता है. सो दिस इज डिफाइनिंग अ यूनियन. This is the accessing members, and since these are all basic data types, so you can access them directly anywhere. Now come to structures. This is the structure. Structure में हमारे पास कुछ basic data types, integer हैं, float हैं, and these are character arrays or strings. So these strings can be as I have initialized कुछ initialize क्या नहीं initialize नहीं करता. हमारे पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी इनिशियलाइज था. इफ आई वांट टू मॉडिफाई द एज ऑफ स्टूडेंट इन दिस एग्जांपल, सो आई कैन स्पेसिफाई st3 डॉट age equals to say it is not 17, it is 19. So I have modified the age of student, and now I'm going to print the age again. Control C, Control V, Control S, 9.
You can see the age has been modified from 17 to 19. Okay, so this is how we can modify individual member, and you can also observe that in this example of structure, no other member has been touched, no member has been modified, and all members are valid at the same time. You can see in first time these were the initially members that we have initialized, and this is after modifying the age. Still all members are retaining their values. जो भी हमने उसे initialize किया था उसी value पर आपके initialized है. Okay, so this is the difference between structure and unions. Now another thing, that if we want to scan the name of a student, suppose I need to scan printf enter name of student. Okay. I'm going to scan the student name. So either I can use scanf, लेकिन scanf के साथ problem आपको मालूम है, scanf can scan only one word at a time. It cannot scan embedded spaces. So it's better to use gets function to scan the strings. Gets s3 dot name. आप इसको इस तरह से स्कैन करवा सकते हैं नेम को. So name will be scanned. Okay. So if you are being asked to scan instead of initialization, so you can scan in this fashion. All the members can be scanned. Name को scan करने के लिए आपको gets use करना पड़ेगा. Address को scan करने के लिए you need to use gets. और age and fees can be scanned with the help of scan statement with %f and %d format specifiers. Okay. Now one more thing that you can do is you can make the copy of structures. You can copy one structure into another structure. You can write st1 equals to st3. So what will happen? It will copy all the members from st3 into st1. This is not unlike arrays. Arrays को आप directly copy नहीं कर सकते, but you can copy structures. जैसा आपने देखा कि array अगर हमारे पास है तो we cannot write like this कि आपने एक array को दूसरे array के बराबर कर दिया, but structures can be assigned. So this is one difference with arrays. कि arrays को आप directly assign नहीं कर सकते, but structures can be assigned in this fashion. You can assign right hand side structure value into left hand side structure variable. जो भी values हैं आपके पास st3 में, they will be assigned to st1 member by member. First member will be assigned to first member, second member will be assigned to second member, and similarly all the members will be initialized. So suppose you can see I modified the age of a student. जो हमने initialize किया था उससे हमने age को change किया, उसके बाद हमने name भी scan करवाया था. Okay. So इस ये छोड़िए, name को अभी हम हटा देते हैं. And we are going to print the value of. अगर हम इसी डेटा को प्रिंट करें, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पर instead of writing st3 we are writing st1 because we have copied the data of st3 into st1. हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं. इस स्टेटमेंट में हमने st3 के डेटा को प्रिंट किया, यहाँ पर हम st1 के डेटा को प्रिंट कर रहे हैं. विल चेक वेदर द टू आउटपुट्स आर सेम और नॉट. सेव फाइल अगेन. You can see the two data members are same, 19 and up to here. This is the first element data, st3 data, and this is data of st1, name, age, name, address, age, and fee, and the process returned some value. Okay, so this is how our program is working. तो स्ट्रक्चर्स के साथ ये एक एडवांटेज है कि अगर आपको स्ट्रक्चर पूरा कॉपी करना हो तो आप पूरा स्ट्रक्चर डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपिंग वैल्यू बाय वैल्यू. आप बजाय मेंबर बाय मेंबर कॉपी करने की आप डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखकर पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकते हैं. ये आपका एक बिगेस्ट एडवांटेज है कि कितना भी बड़ा आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो मेंबर बाय मेंबर ये कॉपी हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में. इज इट क्लियर? सो आई थिंक what time is over. Okay, so I have explained you
about using and declaring unions and structures in our programs, and how can we specify them. One thing more that I want to tell you is that we can use anonymous structures. Anonymous structures के बारे में मैंने आपको बताया था. If this structure is anonymous, means it is not having a name. So just remove the name. So now this structure is anonymous, and we have not done anything else. If I try to run this program, see what happens. This is the error. This is the error, and that we cannot define variable, or you can say, देखिए क्या रहा है इसमें error. Storage size of ST2 is it known? ST2 का size क्या है, ST1 का size क्या, ये known नहीं है, because there is no variable of name student. हमारे पास student नाम का कोई variable exist कर ही नहीं रहा है इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने यहाँ से इसका हटा दिया था. But still you want to use this variable. देखें आप, अगर आप tag name हटा देते हैं, then this definition cannot be used at a later stage. For example, you want to define the variable in main. This is not possible now, but this is possible at the time of definition of the structure. यहाँ पर आपने structure को define किया, इस वक्त ये possible है. आप यहाँ पर अगर define करते हैं st1, st2, st3, this thing is possible. So you need to remove this. बल्कि इसको मैं comment कर दे रहा हूँ. Okay, this has been commented out. So now your variables are all valid. आपके पास जो variables है वो सारे के सारे valid हैं, but they cannot be initialized now. Or if you want to initialize them, you have to initialize at this place. Control C. यहाँ पर आपको initialize करना पड़ेगा अगर initialize करना चाहें. हमने variable दिया, यहाँ पर हमने ST1, ST2 दो वेरिएबल है, ST3 को इनिशियलाइज कर दिया. कंट्रोल एस सेव करिए, ट्राई टू रन इट अगेन. नाउ इट इज फाइन. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनोनिमस स्ट्रक्चर एंड नेम्ड स्ट्रक्चर. ओके, जब आप एनोनिमस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एनोनिमस के साथ आप ये कह सकते हैं कि इसमें एडवांटेज भी है कि आप इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा आप यूज नहीं करना चाह रहे. सो एनोनिमस स्ट्रक्चर शुड बी यूज्ड ओनली इन दोज सिचुएशंस वेयर we need definition only once. We cannot use it later. एक बार आपने anonymous structure define किया, तो जिस वक्त आप structure define कर रहे हैं उस वक्त उसके कुछ variables define कर सकते हैं. जैसे scope में भी आपने variable structure को define किया. One more thing that you can note is that you can define this structure in global scope as it is being defined here, or you can remove it from global scope to some local scope. आप इसे यहाँ पर भी define कर सकते हैं. This thing is also possible. हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होकर मेन के अंदर आ गया. यू कैन स्टिल रन दी प्रोग्राम. सेम आंसर. यू कैन सी द आंसर इज सेम. सो यू कैन डिफाइन योर स्ट्रक्चर्स और यूनियंस इन ग्लोबल स्कोप और इन लोकल स्कोप. बट इफ यू डिफाइन इन लोकल स्कोप, देन दे कैन बी यूज्ड इन द लोकल स्कोप ओनली. यू कैन नॉट यूज दिस स्ट्रक्चर इन अदर फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, you are writing user defined functions, then you cannot use this structure definition in other functions. Okay. But if you have defined it in global scope, then these variables can be defined anywhere in the program. And in case of anonymous structures, you can use the anonymous definitions only once. जो आपने anonymous structure define किया, उसकी definition को आप एक बार use कर सकते हैं, एक ही बार उसकी variable define किए जा सकते हैं, वो भी definition के खत्म होने से पहले जो यहाँ पर आपने semicolon लगाया उससे पहले ही जो भी variable define करने हैं वो आप यहाँ पर define कर सकते हैं. Okay, so this is all about anonymous structures जो हमने आज स्टडी किया. दैट इज हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, हाउ टू डिफाइन अ यूनियन, हाउ टू डिफाइन अ एनोनिमस स्ट्रक्चर. जैसे आपने एनोनिमस स्ट्रक्चर किया, उसी पैटर्न पे आप एनोनिमस यूनियन भी कर सकते हैं. सो एनोनिमस स्ट्रक्चर्स एंड एनोनिमस यूनियंस भी आपको मैंने बता दिए, एंड हाउ टू इनिशियलाइज दीज स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस, एंड हाउ टू स्कैन एंड हाउ टू प्रिंट द वैल्यूज. ओके, सो दिस इज एंड ऑफ अवर टुडेज लेक्चर.